Hello students, welcome to the second video of permutation and combination class. So before starting, first we start Brahmanad. शांति शांति शांति. Sustam. Today we are going to discuss problems of a counting principle on the multiplication and a counting principle on addition. Last class we are already discussed what is counting principle and some problems. Counting principle means if a complete work is divided in two parts, the first part can be done m ways, and when it has been completed each of these m ways, the second part can be done n ways, then the number of ways of doing the complete work is m cross n ways. Suppose if a complete work is divided into three parts, the first part can be done m ways, second part can be done n ways, third part can be done p ways, then the number of ways of doing the complete work is m cross n cross p ways. This principle can be extended into any finite number of sub works. Okay. Last class also we do some problems using multiplication. Today we will do another problems. Okay. One question: in how many ways three letters can be posted in five post boxes. Okay, 5 post boxes. So here 3 letters are there and 5 post boxes are there. Okay. So 3 letters means we divide total work into 3 parts. This one letter 1, letter 2, letter 3. Letter 1 can be posted in any one of the 5 post boxes. No. Letter 2 is also posted any one of 5 post boxes. Letter 3 can be posted any one of the 5 post boxes. Each letters can be posted any one of the 5 post box in how many ways? 5 ways. Letter 1 टा 5 प्रकार वे तुम पोस्टेड कर ना ना जो पोस्ट बॉक्स रे पकेल हम मन को लेटर 1 टा पोस्ट बॉक्स रे 2 रे पकेल लेटर 2 टा कौन पोस्ट बॉक्स 2 रे तुम पके पारिबनी कि से कौन मना करछि तुमको ना सेमती किछि ना लेटर 2 टा मध्य 5 प्रकार वे तुम पोस्ट कर पारियो तेणु आ पई 5 टा ऑप्शन हो आ पई 5 टा ऑप्शन हो आ पई भी 5 टा ऑप्शन हो होला तो 5 into 5 into 5. So each letters can be posted in 5 different ways. So 3 letters can be posted. That is, answer is 5 into 5 into 5. This is 5 row Q. 125 ways. Okay. Answer question number 2. In how many ways? Three rings can be worn in 4 fingers. Four fingers with one ring
with at most with one ring at most each finger okay, one ring at most each finger माने गोटे फिंगर रे तुम अति बेसी रे गोटे रिंग पिंधि पार गोटे रु अधिक पिंधि पार नहीं यू कैनॉट बियर more than one rings in each fingers okay. Now here how many rings are there? 3 rings. How many fingers are there? 4 fingers. 4टा फिंगर अच्छी 3टा रिंग अच्छी तुम काम है कौन करिया को पिंधिया पड़ो नहीं कि अच्छा फर्स्ट रिंग कैन बी वेयर एनी वन ऑफ द 4 फिंगर्स इन 4 ways. मनकर फास्ट रिंगटा तुम ए फिंगर रे पिंधिल हेले सेकेंड रिंगटा ए फिंगर केबे भी पिंधि पारियोनी आउ जो 3टा फिंगर रहिला से भितर कोले फिंगर तुम पिंधि पारियो ना नहीं. सो द फास्ट रिंग कैन बी वर्न एनी वन ऑफ द 4 fingers in 4 ways. After wearing the first ring, now there are how many fingers are there? 3 fingers are there. So the second ring can be wear any one of 3 fingers in 3 ways. Hala. Third ring can be worn or can be wear any one of 2 fingers in 2 ways. Hala. एमती लिखो. सो आम पाखे 3टा रिंग अच्छी मीन्स आम ताको 3टा पार्ट करदे एटा हूँ रिंग 1 रिंग 2 रिंग 3. तो फास्ट रिंग कैन बी वेयर एनी वन ऑफ 4 fingers इन 4 ways. तेणु आपाई 4टा ऑप्शन हम आपाई 3टा ऑप्शन हम 2टा गोटे कमिजी ना कि आपाई 2टा ऑप्शन हम. सो 3 rings कैन बी वेन in 4 fingers equal to 2 into 3 into 4 that is 12 ways. 12 ways okay. जदि ए कंडीशन से दे न था बोले तुम ये 4 आपाई 4 आपाई भी 4 होता. सो दिस वन इज काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो काउंटिंग प्रिंसिपल आम मल्टीप्लिकेशन यूज करी हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम यू नो. Third question, another question. How many 4-digit even numbers can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 where all digits are distinct. All digits are distinct. Okay. So how many 4-digit even numbers can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 where all digits are distinct. So here how many digits are there? There are 6 digits. What we make? We make 4-digit even numbers. How can you know a number is an even number? Those numbers which are divisible by 2. Or if unit place contains 0, 2, 4, 6, 8, then it must be an even number. But here we use digits 1, 2, 3, 4, 5, 6. So even number means the unit place must be filled. Unit place must be contain 2 or 4 or 6. Unit place रे 2 रहिले 4 और 6 रहिला के से नंबर टा कोन हो
even number हम okay. Since repetition all digits are distinct means repetition is not allowed. Okay, answer you write we use digits 1 to 6. 4 digited even numbers means we divide the complete work into how many parts? 4 parts. तेणु आम टोटल वर्क डा कौन करिया 4टा पार्ट डिवाइड करिया. दिस वन इज यूनिट प्लेस and this is the 10th place, 100 place and this one is 1000 place. Okay, 1000 place. Okay, so unit place contains only 2, 4, 6. So unit place can be filled any one of 2, 4, 6 digits in how many ways? 3 ways. तमें बेले यूनिट प्लेस रे केवल 2 रखिपार कि 4 रखिपार कि 6 रखिपार. तेणु गोटे डिजिट रखा पड़ो. को डिजिटा रखिबो एटा रखिलब एटा रखिलब एटा रखिलब 2, 4, 6. So unit place can be filled any one of even digits in how many ways? 3 ways. तो फास्ट तुम ये यूनिट प्लेसटा फिलअप करा पड़ो. फास्ट वी फिलअप यूनिट प्लेस देन एनी वन प्लेस आर फिलअप नो प्रॉब्लम. यूनिट प्लेस फिलअप कलापर तुम जो प्लेसटा फिलअप कर आउ किसी प्रॉब्लम ना ना ना. सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड देख ये जो डिजिटा रही से डिजिटा के रही बिकज ऑल डिजिट आर डिस्टिंक्ट कही. So the 10th place can be filled any one of remaining 5 digits. Remaining total केतरा digit अच्छी 7 digit 6 digit अच्छी ना कि 6 digit अच्छी. So the 10th place can be filled any one of the 5 digits in 5 ways. 5 ways. बर्तमान 2टा प्लेस फिलअप है. 2टा प्लेस रे 2टा डिजिट रहिबो. 2टा प्लेस फिलअप हैला परे हाउ मेनी डिजिट्स रिमेनिंग? देयर आर 4 डिजिट्स. हाउ मेनी प्लेस आर देयर? 2 प्लेस. सो द 10th प्लेस कैन बी फिलअप्ड एनी वन ऑफ 4 डिजिट्स इन हाउ मेनी वेज? 4 ways. Okay, now 1000 place can be filled any one of the 3 digits in 3 ways. So the total number of 4 digited even numbers using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 where all digits are distinct equal to 3 into 4 into 5 into 3. Yes, so 15 into 4 60 60 into 3 180 numbers. तो फास्ट यू राइट ना देख कौन लिखे हम फास्ट हियर वी राइट वी यूज डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We make 4 digited even numbers. So first we fill up unit place. So unit place can be filled up any one of even digits in 3 ways. After filling unit place, remaining 6 digits are there. Remaining 5 digits are there. 10th place can be filled any one of the 5 digits in 5 ways. 100 place can be filled any one of the 4 digits in 4 ways, and 1000 place can be filled any one of 3 digits in 3 ways. So by counting principle, number of 4 digited even number is 3 into 4 into 5 into 3, that is 120. Okay. If we ask how many 4 digited numbers or 4 digited even numbers can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, where repetition is allowed. If repetition is allowed, then what will be number of 4 digited? देखो repetition allow हेले भी यूनिट प्लेसटा कौन रखा पड़ो 3 प्रकार फिलअप हम. यूनिट प्लेस कैन बी फिलअप्ड in 3 ways. Since repetition is allowed,
So the 10th place can be filled any one of the 6 digits in the 6 ways. आप 6 way होबो 100,000 place 6 होबो. So answer is 6 into 6 into 6 into 3 होबो. Do you understand? जदि रिपीटेशन अलाउ होबो एट तो तीन प्रकार वे फिलअप होबो आप 6 होबो आप 6 होबो आप 6 होबो. तो 6 into 6 into 6 216 into 3 जा आसियो ना नहीं. नेक्स्ट, how many 4-digit numbers can be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if repetition is allowed? Number 1. Number 2 repetition is not allowed. So repetition are allowed means digits are not distinct. Okay, repetition is not allowed means digits are distinct. All digits are distinct. Okay, answer. We use digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5. How many digits are there? 6 digits. Okay. We make 4-digit numbers. So 4-digit number means first कौन करियो? You divide the total work into 4 parts. तेणु तुमको 4टा घरा करिया पड़ियो. 4टा घरा करियो. एटा होची तमरो यूनिट प्लेस. एमदी लिख दो सदाले यूनिट प्लेस. एटा 10th प्लेस, 100th प्लेस. एटा होची 1000th प्लेस, 1000th प्लेस. Okay. Since repetition is allowed, so you can fill up any place. जेतु repetition allow कहिची आउ odd number की even number किछि कहनी, so you can fill up any one of the place your choice. तेणु तुम जो प्लेसटा फिलअप कले भी ये प्रॉब्लम किसी ना है. सो यूनिट प्लेस कैन बी फिलअप्ड एनी वन ऑफ द 6 digits in 6 ways. Since repetition is allowed, so the 10th place and 100th place can be फिलअप्ड in 6 ways. तेणु 10th place टा 6 प्रकार वे रे तुम फिलअप कर पारियो. 100 place is also fill up in the 6 ways, but 1000 place, देखो 1000 place you cannot fill up in 1000 place 0. तेणु 1000 place रे 0 केबे भी रखी पारिबो नाही, because if you fill up 0 in 1000 place then it will be 3-digit number, it never be 4-digit number. No. So the 1000 place can be fill up to any one of the 5 digits in 5 ways. Do you understand? So the number of 4-digit numbers where repetition is allowed, answer 1, repetition is allowed is 5 into 6 into 6 into 6, and this is 5 into 6 cube. So 216 into 5 जा आसियो 7. ओके, मल्टीप्लिकेशन करी लिखिबो. तो तुमको ये टोटल एमदी लिखिले हबनी, ए लिखियार अछि तमे टू मेक सेंटेंस लिखियो है ना. We use digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. There are 6 digits. We make 4-digit numbers. So the unit place can be filled up to any one of these 6 digits in 6 ways. Since repetition is allowed, 10th place and 100th place can be filled up to any one of these 6 digits in 6 ways. Since 1000 place never contains 0, so 1000 place are filled up in 5 ways, any one of the 5 digit in 5 ways. So by the counting principle, number of 4-digit numbers is 5 into 6 into 6 into 6, that is the 5 into 216. Next, number 2, repetition is not allowed. If repetition is not allowed, what happen? देखो जदि repetition allowed कोई नहीं, एटा होची तमरा यूनिट प्लेस, 10th place, 100th place, and this is 1000 place. So एटी कौन हम देखला यूनिट जदि repetition, if repetition is not allowed, what happen? Suppose you fill up first unit place. So unit place can be fill up any one of 6 digits in how many ways? 6 ways. आप के जब यूनिट प्लेस फिल अप कर असुविधा कौन हो देख
एटा 6 वेस है आप ऑप्शन है 6 है सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तेणु ये जो ए प्लेस रे जो डिजिटा रहिबो ए प्लेस रे से डिजिटा रहिबोनी ना सो द 10th प्लेस कैन बी फिलअप्ड एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 5 digits in 5 ways and the 100th place can be filled any one of 4 digits in 4 ways आप 4 हम 1000 प्लेस रे 0 रहिबोनी आ ए प्लेस रे जो डिजिटा थिबो ए प्लेस रे जो डिजिट थिबो ए प्लेस रे जो डिजिट थिबो से 3टा डिजिट केबे रहिबोनी एडी 0 केबे रहिबोनी सो टोटल केतरा আছে 6टा डिजिट अछि 6टा डिजिट रु एडी 0 रहिबोनी केबे भी आउ ए 3टा डिजिट जोड़ा फिलअप हेथियो से 3टा डिजिट रहिबोनी सो 3 ये 4 4टा डिजिट रहिला गला परे आउ रिमेनिंग केतरा रहिला 2टा डिजिट अछि कान टोटल 6 डिजिट अछि तो 6 digit out 2टा डिजिट रहिला सो 1000 प्लेस कैन बी फिलअप्ड एनी वन ऑफ 2 digits in 2 ways तार से आप ऑप्शन केते हो 2 जदि कहीं ये 0 रहिबोनी ए जो 3टा जो डिजिट थिबो से 3टा केबे भी रहिबोनी तेनु आप ऑप्शन होची 2 जदि इफ 0 contain any one of these 3 places जदि 0टा ए भितरे गोटे रहि आइथियो बेले आप ऑप्शन केते होची 3 हे होची ना देख 0टा जदि ए भितरे कोड जदि रहि आइथियो बेले आप ऑप्शन 2 होबो कि आप ऑप्शन 3 हे जियो ऑप्शन 3 होबो इमदी कले ऑप्शन 2 होची जदि 0 कोड रहि नथियो बेले ऑप्शन 2 होबो 0 भितरे कोड कोड रहि आइथियो माने आप ऑप्शन के 3 हे जियो ना तो देयर विल बी क्रिएट ए प्रॉब्लम इट मे बी 2 ways or it may be 3 ways so problem will be create to fill up 1000 places so first we fill up the 1000 place so in such case we cannot fill up in a unit place first in the unit place here first we fill up 1000 place because 1000 place never contains 0 जेतु 1000 प्लेस रे 0 रहिबो नाही and repetition is not allowed so you must fill up 1000 place okay so एमदी केबे भी हेई परिबो नाही so first we fill up 1000 place तेणु 0 थिबो डिस्टिंक्ट कहि थिबो you must fill up लास्ट प्लेस टा फिल अप करियो केबे भी फर्स्ट प्लेस टा फिल अप करिबो नाही एटा होची यूनिट प्लेस 10th प्लेस 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस ओके सो फर्स्ट वी फिल अप 1000 प्लेस आफ्टर फिलिंग 1000 प्लेस देन यू कैन फिल अप एनी वन ऑफ दिस प्लेस 1000 प्लेस टा फिल अप कला पर तमे जो प्लेस टा फिल अप कले भी असुविधा किछि नाही किंतु 1000 प्लेस टा जदी लास्ट फिल अप करियो बोले प्रॉब्लम क्रिएट हबो सो फर्स्ट वी फिल अप 1000 प्लेस एनी वन ऑफ 5 digit kind तो 0 रहियोनी ना so the 1000 place can be filled up any one of these 5 digits in 5 ways after filling 1000 place now remaining how many digits are there 5 digits are there एडा fill up कला परे आउ तम पाकरे केतरा अछि 5टा डिजिट एडी 0 केबे रहियोनी आ 5टा डिजिट तुम यूज कर परियो सो एडा 5 ways हला so एटा filling हला परे now remaining how many digits are there 5 digits are there so the 100 place or तुम जो place टा fill up करछो कर जाइस नै 100 place can be fill up any one of the 5 digits in the 5 ways आ बाय ऑप्शन 4 हबो काहे कि टोटल 6 रु 2 पळेला आ 4टा अछि आ 4 हबो बर्तन 3टा प्लेस फिल अप हला परे 3टा डिजिट पळेला आ केतरा डिजिट अछि आ 3टा डिजिट रहला गोटे प्लेस अछि so the unit place can be filled up any one of the 3 digits in 3 ways so repetition is allowed number of 4 digit is 5 into 5 into 4 into 3 and this is 25 into 4 ketala 100 into 3 that is 300 eta hoche 300 hobo repetition not allowed gole if repetition is allowed then it will be 216 into 5 do you understand जदि रिपीटेशन नॉट अलाउड कहिथिबो 0 होइत कहिथिबो 0 थिले तमे कोन करियो यूनिट प्लेस आरो फिल अप न करिग्री 1000 प्लेस आरो फिल अप करिया पड़ियो ओके
जदि 1000 प्लेसटा लास्ट तुम फिलअप कर बोले प्रॉब्लम क्रिएट हम तेणु 1000 प्लेसटा फास्ट फिलअप कर डू यू अंडरस्टैंड रिमेंबर दिस पॉइंट ओके नेक्स्ट we do another problem also. How many 4-digit odd numbers can be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if repetition is allowed? Number 2, repetition is not allowed. If repetition is allowed, then problem is not. You can fill up any place. But if repetition is not allowed, then there is a problem. So in such case, you fill up carefully. नॉट फास्ट फिलअप यूनिट प्लेस ना नहीं अच्छा देख आंसर फर्स्ट रिपीटेशन इज अलाउड so here we make 4-digit odd numbers. First you have to write we make 4-digit odd numbers using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. You know odd number means a number whose unit place is 1, 3, 5, 7, 9. Unit place contains odd digits, then that number must be an odd number. So to make odd numbers, first you have to fill up which place? यूनिट प्लेस तेणु फास्ट तुम ये कौन करा पड़े यूनिट प्लेस फिलअप करा पड़े है अच्छा सो 4-digit numbers means you make 4 parts. This one is unit place, tenth place, 100 place and 1000 place. So first we fill up here repetition is allowed. No problem is there, you can fill up any place, but for understanding first we fill up unit place. Okay, so unit place can be filled up any one of digits 1, 3 and 5 in how many ways? In 3 ways. Unit place ta tome 3 प्रकार वेरागा fill up करि पारियो. Okay, since repetition is allowed, so the 10th place can be filled up any one of the 6 digits. कहीं 6टा डिजिट अच्छे इन 6 वे तेना आप भी ऑप्शन 6 हम आप ऑप्शन कौन हम ये केबे भी 0 रही ना 1000 प्लेस नॉट कंटेन 0. So 1000 प्लेस कैन बी फिल अप एनी वन ऑफ द 5 digits in 5 ways. So answer is 5 into 6 into 6 into 3. Okay, so 5 into 6 into 6 into 3. so ये होची कौन होची आसियो हमर केते आसियो जे अच्छा. So the answer is now okay, so 5 into 6 30 into 6 है so 180 into 3 18 3 जा 54 540 तो 540टा नंबर हो पारियो इफ रिपीटेशन इज अलाउड. नंबर 2 repetition not allowed. तो repetition is not allowed means देखो so you make 4 place. This one is unit place, 10th place, 100 place and 1000 place. Since we make odd numbers, so first you fill up unit place. 0 अच्छी 0 रही भी जेहेतु ऑड नंबर कही ना यूनिट प्लेस आमको कौन रखा पड़ो ऑड डिजिट रखा पड़ो. सो हियर फास्ट वी फिल अप यूनिट प्लेस. सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप एनी वन ऑफ 3 ऑड डिजिट्स इन 3 वेज. तेणु यूनिट प्लेसटा तुम 3 प्रकार भाव फिल अप कर पारियो है. आफ्टर फिलिंग यूनिट प्लेस नाउ रिमेनिंग हाउ मेनी यूनिट प्लेस फिल अप कल मीन्स ये गोटे डिजिट रहा कहले गोटे डिजिट रही 1 रही 3 रख 5 रख फिलअप कला मीन्स तुम गोटे डिजिट रख ऑप्शन है 3 आप ऑप्शन होची 3. सो आफ्टर फिलिंग यूनिट प्लेस नाउ रिमेनिंग हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 5 डिजिट्स आर देयर कहीं टोटल कौन अच्छे 6टा डिजिट अच्छी. अच्छा देख यहाँ हूँ 10th प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस.
So 1000 place never contain 0 जेहेतु 1000 place रे 0 रहिबो नाही तेणु तुम ये यूनिट प्लेस 10th प्लेस न फिलअप कर तुम ये 1000 प्लेसटा फिलअप कर तो हियर फास्ट वी फिलअप यूनिट प्लेस बिकॉज वी मेक ऑड नंबर फॉर ऑड नंबर एंड इवन नंबर फास्ट यू फिलअप यूनिट प्लेस आफ्टर फिलिंग यूनिट प्लेस देन यू गो टू फिलअप 1000 प्लेस तापर तुम लास्ट प्लेसटा फिलअप करिया पड़ियो ओके रिमेंबर दिस पॉइंट So the 1000 place, it is 1000 place never contain 0. 8 0 केबे रहियोनी आ 8 जो डिजिट ता थिबो से डिजिट ता भी रहियोनी बुझुछि ना डू यू अंडरस्टैंड 1000 place do not contains 0 हला and that number must be not include this place. So the 1000 place can be filled any one of the देखो 1000 प्लेस रे 0 रहिबोनी आ यूनिट प्लेस रे दो डिजिट थिबो से डिजिट रहियोनी सो 1000 प्लेस कैन बी फिलअप्ड एनी वन ऑफ 4 डिजिट्स कहीं टोटल 6 डिजिट टू 2 डिजिट गला रिमेनिंग 4 डिजिट रहिला सो द 1000 प्लेस कैन बी फिलअप्ड एनी वन ऑफ द 4 डिजिट्स इन 4 ways. After filling 2 place means 2 digits are left. So 2 digits are left means how many digits are there? 4 digits are there. So the 100 place can be filled any one of the 4 digits in 4 ways and the 10th place can be filled up by 3 ways. Okay. So the total number of 4 digited odd numbers repetition is not allowed is 4 into 4 into 3 into 3. Do you understand? देखो here first we fill up unit place. Unit place can be filled up any one of the 3 odd digits in 3 ways. Since repetition is not allowed and 0 is there also, so we fill up 1000 place. जेहेतु 1000 place रे 0 केबे रहिबोनी 8 जो डिजिट थिबो से डिजिट रहियोनी तेनु 2 डिजिट लेफ्ट करियो 2 डिजिट लेफ्ट कला परे टोटल 6 डिजिट अच्छी 6 डिजिट अच्छी 2 डिजिट लेफ्ट हेले और रिमेनिंग 4 डिजिट रहिला सो द 1000 प्लेस कैन बी फिलअप्ड एनी वन ऑफ द 4 डिजिट्स इन 4 ways. After filling 2 places means 2 digits are there. So now remaining 4 digits. So the 100 place can be filled in 4 ways. Then 10th place can be filled in 3 ways. बा तमे ए दिरा फिलअप कला परे तमे मन करो फास्ट 10th प्लेसटा फिलअप करियो 10th प्लेस 4 हम तापर एटा फिलअप कले एटा 3 हम बा फास्ट जदि 100 प्लेसटा फिलअप करियो आ 4 हम तापर 3 हम सो द नंबर ऑफ 4 डिजिटेड ऑड नंबर्स इक्वल टू 4 into 4 into 3 into 3 तो 4 into 3 12 into 12 इक्वल टू 144 जदि रिपीटेशन अलाउ होबो you can make 440 odd digits for 540 odd numbers. If repetition is not allowed, then you can make 144 numbers for 144 odd numbers where repetition is not allowed. Okay. How many 4 digited numbers can be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 where digits are distinct. Okay, digits are distinct means repetition is not allowed. Since repetition is not allowed and 0 is also there, so answer is first we write we use digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now there are 6 digits. We make 4 digited numbers means we make 4 parts. This is the unit place, 10th place, 100 place and this is the 1000 place. Here since repetition is not allowed, you make 4 digited numbers. So you fill up first 1000 place because 1000 place do not contain 0. एडी तुम्हें फास्ट 1000 प्लेसटा फिलअप करिया पड़ियो ना नहीं गत प्रोग्राम में ऑड डिजिट नौतले जेहेतु ऑड नंबर क्रिएट करते सो वी फिलअप यूनिट प्लेस देन आफ्टर वी फिलअप 1000 प्लेस बट हियर फास्ट वी फिलअप 1000 प्लेस because
1000 प्लेस डू नॉट कंटेन जीरो ना नहीं जेहेतु ये जीरो रही तेणु ए प्लेसटा को फास्ट फिलअप करा पड़ो सो दी 1000 प्लेस कैन बी फिलअप्ड एनी वन ऑफ 6 डिजिट्स सॉरी जीरो के रही सो दी 1000 प्लेस कैन बी फिलअप्ड एनी वन ऑफ दी 5 डिजिट्स इन 5 ways after filling 1000 place remaining how many digits are there remaining 5 digits are there so 10th place you can fill up 10th place or you can fill up 100 place or you can fill up 10th place no problem so the 10th 100 place can be filled up any one of the 5 digits in 5 ways and the 10th place can be filled up any one of the 4 digits hala because after filling 100 place and 1000 place now remaining 4 digits are there so the 10th place can be filled up any one of the 4 digits in the 4 ways and the unit place can be filled up any one of the 3 digits in 3 ways देखो फास्ट तुम 1000 प्लेस फिलअप कल 1000 ऑप्शन कौन हम कहीं जीरो रही टोटाल 6टा डिजिट अच्छी किंतु जीरो रही मैंने आप ऑप्शन हम 5 हम यहाँ फिलअप है आउ रिमेनिंग केतटा डिजिट अच्छी 5टा डिजिट रहा सो 100 5 ऑप्शन हम बर्तमान 2टा प्लेस फिलअप है 2टा प्लेस 2टा डिजिट सो 2टा डिजिट लेफ्ट है 4टा डिजिट रहा तो या ऑप्शन 4 हम या ऑप्शन 3 हम सो दी टोटल 4 डिजिटेड नंबर्स यूजिंग डिजिट्स 0 to 5 where all digits are distant is 5 into 5 into 4 into 3 that is 300 okay do you understand in this way you have to write किंतु you make not you write directly answer 300 you make the sentence we make 4 digited numbers using digits 0 1 2 3 4 5 so first we fill up 1000 place can be fill up any one of the 5 digits in the 5 ways since repetition is not allowed 100 place 10th place and unit place can be fill up 5 into 4 into 3 ways so by counting principle the total number of 4 digit numbers equal to 5 into 4 into 3 sorry 5 into 5 into 4 into 3 this is the 300 numbers okay in this way you have to write it not you can write directly 300 remember this point next we go to counting principle on addition okay you know counting principle on addition means first we do some problems okay first we take an example in a class containing 30 students okay out of 30 students 20 boys and 10 girls okay in a class containing 20 boys student and 10 girls student in how many ways can a student select for class monitoring that student either boys or girls okay what is the question in a class containing 30 students out of which 20 boys and 10 girls one student is selected for class monitoring in how many ways this student can be selected okay so in that class there are how many boys are there 20 boys how many girls 10 girls so you can select a student that student may be a girl or may be a boy student can be selected out of 20 boys in how many ways 20 ways if a girl is selected for monitoring in how many ways the selection can be made there are 10 girls means 10 ways so a boy student can be selected in 20 ways and a girl student can be selected 10 ways so a student can be selected either a boy or a girl
That answer is what? 20 plus 10. Answer is 20 plus 10. तेणु गोटे पिला को सिलेक्शन करिबो जो स्टूडेंटा कौन हेतियो एइदर बॉय हेतिबो और गर्ल. So boy student can be selected in 20 ways and girl student can be selected in 10 ways. So the total number of selection can be made 20 plus 10, that is 30 ways. So here answer is 20 plus 10, not 20 into 10. एटी केबे भी 20 into 10 हबनी पिले कहीं आम गोटे पिला को सिलेक्शन करिया. दैट स्टूडेंट मे बी एदर ए बॉय और ए गर्ल. So a boy student can be selected in 20 ways, work is finished, or a girl student can be selected in 10 ways. तेणु गोटे स्टूडेंट आम सिलेक्शन करिया से पिलाटा एदर बॉयज होइतिबो और गर्ल्स. तो 20 plus 10, that is 30, not 20 into 10. Okay. Next another question also we take. Suppose there are 3 bags. Bag 1 and this is bag 2 and this is bag 3. In bag 1 contains 5 red balls, 4 white ball. Bag 2 contains 6 red ball, 3 white ball. Bag 3 contains 7 red ball and 2 white ball. Okay. Now there are 3 bags. Bag 1 containing 5 red, 4 black, 4 white. Bag 2 contains 6 red, 3 white ball. Bag 3 contains 7 red and 2 white balls. A ball is selected from this bag. That ball is red ball. That ball is red ball. In how many ways a red ball is selected? In how many ways a ball is selected from these bags? That ball is a red ball. Se ball da kon hetiyo? Red ball hetibo. So red ball can be selected from bag 1 or from bag 2 or from bag 3. So a red ball can be selected from bag 1 in how many ways? 5 ways, because in bag 1 containing 5 red. So one red ball can be selected from bag 1 in 5 ways. One red ball can be selected from bag 2 out of 6 red balls in 6 ways. One red ball can be selected out of 7 red balls in bag 3 in 7 ways. So red ball can be selected from bag 1 or from bag 2 or from bag 3. So this is 5 plus 6 plus 7. This is 5 plus 6, 11 plus 7 into 18. So one red ball can be selected from 3 bags in how many ways? 18 ways. Do you understand? गोटे बॉल सिलेक्शन करियो, रेड बॉल सिलेक्शन करियो 3टा बैग रु, तो तुम बैग 1 रु सिलेक्शन कल हम कि बैग 2 रु सिलेक्शन कर कि बैग 3 रु सिलेक्शन कर. So the answer is 5 plus 6 plus 7. Okay. So counting principle on addition means if a complete work is divided in 2 parts, the first part and the second part can be done independently in m and n ways, then the total number of ways of doing the complete work is m plus n ways. Okay, suppose if a complete work is divided into 3 parts, first part, second part, third part can be done m, n and p ways independently, then the total number of ways of doing the complete work is m plus n plus p ways. 80 plus हम गोटे बॉल सिलेक्शन करियो सेटा रेड बॉल हेतियो, रेड बॉल ला कूड आसियो
बैग 1 रू आसीपे और बैग 2 रू आसीपे और बैग 3 रू आसीपे ना नहीं दैट इज प्लस एडू आसीपे कि एडू आसीपे गोटे पचे क्लास बॉयज अच्छा गर्ल्स अच्छे गोटे पिला को सिलेक्शन करियो एदर बॉयज और गर्ल्स जो पिला सिलेक्शन करिया से पिलाटा कौन हो एदर बॉयज हो पारे और गर्ल्स हो पार तो बॉय कैन बी सिलेक्टेड इन 20 ways गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 10 ways सो टोटल इज 10 20 + 10 दैट इज 30 है ना कि टोटल के 30 स्टूडेंट अच्छी 30 स्टूडेंट गोटे सिलेक्शन करिया दैट इज 30 सिंधी सब जाक रेड बॉल मिसेले कौन अच्छे 5 + 6 + 7 के 18 बॉल अच्छी 8टा रेड बॉल अच्छी गोटे बॉल सिलेक्शन करिया सो 18 18टा बॉल अच्छी गोटे बॉल सिलेक्शन करियो तो 18 प्रकार वे सिलेक्शन हम तो 18 है लाइक दैट एटा को एडिशन करी आम बाहर करचे दैट इज नोन एज काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन डू यू अंडरस्टैंड okay so counting principle on addition means a complete work is divided into two parts the first part and the second part can be done m and n ways independently then the total number of ways of doing the complete work is m plus n ways this is known as counting principle on addition okay for example a class containing 30 students out of which 20 boys and 10 girls in how many ways a student can be selected for represent class monitor so the class monitor करिया पाए गोटे स्टूडेंट को सिलेक्शन कराबो so answer is a boy student can be select out of 20 boys in 20 boys select out of 20 boys out of 20 boys in the 20 ways okay a girl student can be select out of 10 girls in 10 ways okay so a student can be select 20 plus 10 equal to 30 ways तेणु बॉय स्टूडेंट सिलेक्शन कला 20 प्रकार सिलेक्शन कर बा गोटे गर्ल स्टूडेंट सिलेक्शन कले 10 प्रकार वे सिलेक्शन कर सो द नंबर ऑफ सिलेक्शन वन स्टूडेंट कैन बी मेड 30 ways ओके दिस इज द आंसर नेक्स्ट in a basket contains 20 orange 10 apples and 5 bananas okay in how many ways one fruits can be choose from these baskets so basket contains 10 orange 20 orange 10 apples 5 bananas one fruits can be selected so the fruits may be orange or may be apple or may be a banana so a orange fruit can be selected out of 20 orange in how many ways 20 ways one apple fruit can be choose out of 10 apples in how many ways 10 ways one fruit banana can be choose out of 5 bananas in how many ways 5 ways so one fruit can be selected that fruit may be orange or may be apple or may be banana so banana fruit can be selected 5 ways one apple fruit can be selected 10 ways one orange fruit can be selected 10 ways so the number of answer is one fruit can be choose from these baskets
baskets equal to 20 plus 10 plus 5. Okay, so this is 35. So in 35 ways one fruits can be selected from these baskets. But if we ask 3 fruits can be selected from these baskets, one is orange, other is mangoes, other is apple, and another is banana. If we ask in how many ways 3 fruits can be selected, one fruit is orange, other fruit is apple, another fruit is banana. जदि 3टा फ्रूट सिलेक्शन करिया कहि थाता गोटे ताइरु ऑरेंज हेतिबो गोटे बनाना हेतिबो आ गोटे एप्पल हेतिबो मीन्स हियर यू डू one orange can be selected out of 20 orange in 20 ways, one apple can be choose out of 10 apples in 10 ways, one banana can be choose out of 5 bananas in 5 ways. So the number of 3 fruits can be selected equal to kon hita se 20 into 10 into 5. So this is 2 into 5 10 into 0 0. Okay, 1000. Okay, so in 1000 ways 3 fruits can be selected. जदि 3टा फ्रूट सिलेक्शन करिया कहि थाता बोले तुम ये वार्कटा कौन हम वार्कटा को 3 भाग कल 3 भाग कले गोटे फ्रूट हम बानाना रू आसो आउ गोटे ऑरेंज रू आसो आउ गोटे एप्पल रू आसो माने 20 into 10 into 5 हम 3टा फ्रूट हेल्ले इंटू हम कहीं तुम कामटा ये 3 भाग हम से कामटा कौन इंडिपेंडेंटली गोटे फ्रूट सिलेक्शन है तो वन फ्रूट कैन बी सिलेक्ट एइदर ऑरेंज और एप्पल और बनाना but here 3 fruits selected. So 3 fruit means one is orange koichi, other is apple and another is banana. So by counting principle it will be 20 into 10 into 5. Okay, same the 8 jodi koi thata in a class containing 30 students out of which 20 boys and 10 girls, in how many ways a student or 2 students ko jodi koi thata two students can be selected for represent class monitor means here देखो 2 student select करी होबो one boy student one is boy student and other is girl student तो 2 student select करी हो one is boy student and other is girl student. So here the answer is one boy student can be select out of 20 boys in 20 ways, one girl student can be select out of 10 girls in 10 ways. So the number of selection of 2 students, one is boy and other is girl, is 20 into 10. This is 200 ways. जब 2 student selection कोया कोई था गोटे boys हम आउ गोटे girls हम ना ये कौन हम 20 into 10 हम कहीं वर्कटा केतल कंप्लीट हम वर्कटा को कंप्लीट करिया पई 2 भाग कराला गोटे boy student रहबो गोटे girls वर्कटा कंप्लीट हम ताने गोटे boy student रहबो गोटे girls तो 20 into 10 हम. सो ये कौन वर्कटा कौन ये 3टा फ्रूट सिलेक्शन कराब गोटे ताइरु ऑरेंज हम गोटे एप्पल हम आ गोटे बनाना हम. सो 20 into 10 into 5 20 into 10 into 5. In this way you have to calculate by using counting principle of addition and counting principle of multiplication. Do you understand? How many numbers less than 600 can be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 where all digits are distinct. Okay, so in that questions we make the numbers which is less than 600 using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 where all digits are distinct means repetition is not allowed. So number less than 600 means number may be 1 digited, numbers may be 2 digit numbers, number may be 3 digited. Okay, but all 3 digited numbers never be less than 600
all one digit numbers must be less than 600, all two digit number must be less than 600. Okay. So answer is, we use the digits, we use digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 7 digits. We make numbers less than 600, less than 600. So the numbers, one digits, two digits, or three digits, and three digits. Okay, three digits. Number of one digits, number of one digits equal to 6 होगा नहीं कि number of two digits, number of one digit 6, number of two digits number equal to, so two digit number means since the distinct repetition is not allowed, so the 10th place can be filled up any one of these 6 digits in the 6 ways. Okay, after fill up 10th place, now remaining how many digits are there? Total is 7 digits. Now remaining 6 digits are there. So the unit place can be filled up any one of the 6 digits in 6 ways. So the number of 2 digit numbers equal to 6 into 6 equal to 36. है जेहेतु 10th प्लेस रे केबे भी 0 रहइबो नाही, तेनु फास्ट वी फिल अप 10th प्लेस, तेनु 10th प्लेस टा पई ऑप्शन हबो 6 हबो. एडी फिल अप हला पर एडी जो डिजिट टा रहइबो एडी से डिजिट रहियोनी. So unit place can be filled up any one of these 6 digits in 6 ways. That's why the number of 2 digits number equal to 36. Number of 3 digits number. So 3 digit number means, okay, so we make the total number into 3 parts. This is the unit place, 10th place, 100 place. So we make number less than 600 means unit place, 100 place can be filled either 1 or 2 or 3 or 5, 1 or 2 or 3 or 4 and 5. ना नहीं एटी केबे भी 6 रहियोनी ना. जदि एटी 6 रहियो means 6 रहिले एटी जदि 1 2 रहि जोले सन कोन होची greater than 600 होची, but we make less than 600. So 100 place can be filled up any one of 1 2 3 4 5. Okay, in how many ways? 5 ways. आप पाई ऑप्शन होबो 5 होबो. एटी 0 केबे रहियोनी आ 6 टा भी रहियोनी, तेनो आप पाई ऑप्शन होबो 5 होबो. Okay, so now you can fill up any place, either 10th place or unit place, no problem. Okay, so the 10th place can be filled up any one of remaining. एटी गोटे fill up हला परे आ केतरा डिजिट रहिला 6 डिजिट अछि ना, टोटल 7 डिजिट अछि, एटी गोटे रहि गेला
means there are remaining 6 digits. So 10th place can be filled any one of the 6 digits in 6 ways. In 6 ways. Okay. In 6 ways. Then unit place can be filled any one of remaining 5 digits. कहीं दीटा प्लेस फिलअप होला दीटा डिजिट गला सो दीटा डिजिट गला आ केतरा डिजिट अच्छी रिमेनिंग 5 digits are there. Okay, so the 10th place can be filled any one of the 5 digits in 5 ways. So the number of 3 digit numbers equal to 5 into 6 into 5, and this is okay 30 into 6 180. So total numbers number which are less than 600 or where all digits are distinct since repetition is not allowed, less than 600 equal to 6 plus 36 plus 180. So 6 plus 6 is 12, 9 and 3 12, okay, 2. So 212 numbers which are less than 600 using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 where all digits are distinct. Okay, so this is not 1212, that is the 222. Okay, so if repetition is allowed, what will be total numbers which are the less than 600? If repetition allowed means number of 1 digit numbers 6 of number of 2 digit numbers means here this is the 10th place can be filled up any one of the 6 digits in the 6 ways. तो यहाँ पे क्या होगा यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप एनी वन ऑफ दी 7 digit in 7 ways. तो यहाँ पे 6 ऑप्शन हम यहाँ पे 7 ऑफ 6 into 7 हम है ना. Our number of 3 digit number if repetition is allowed here 100 plus can be filled up any one of the 6 digits, any one of the 5 digits. कहीं 6 रही 0 रही है ना. So 100 plus can be filled up any one of these 5 digits in 5 ways. But 10th place and unit place can be filled up any one of the 7 digits in the 7 ways. जो रिपीटेशन एलाउ हम या 5 हम कि या 7 हम या 7 हम तो 7 into 7 into 5 हम आउ 2 digit या 6 हम कहीं 0 के 6 हम या 7 हम 6 into 7 42 ये 7 into 7 into 5 1 digit हम 6 हम ये 3टा को ऐड करिया पड़ियो. तेणु लेस देन 600 हो कि आम बाहर करिया पड़ियो. फास्ट 1 digit बाहर कले 2 digit बाहर कले 3 digit बाहर कले देन यू ऐड 1 digit 2 digit 3 digit. दैट इज द टोटल नंबर which are less than 600. Okay, next okay some questions for yourself. Find how many numbers greater than 500 can be formed using digits 2, 3, 4 and 5 if repetition of digits is allowed. So 500 greater means the number must be what 3 digited and numbers 4 digited, but you cannot make 5 digited numbers because we have digits 2, 3, 4, 5. जेहेतु आम पाखे 4टा डिजिट अच्छी तेणु आम 4 अंक विशिष्ट संख्या पर्यंत तैयारी करि परिया ना नहीं. So the here number greater than 500 means you make number of 3 digited numbers and number of 4 digited numbers. Okay, 3 digited 4 digited बाहर करी ऐड करियो. Number 2, find the numbers between 400 and 1000 which can be formed using digits 2, 3, 4, 5, 6, 0. Okay. So using digits 2, 3, 4, 5, 6, 0. Here repetition is not allowed or repetition is allowed not given means you can use repetition is allowed. किसी नाई means
तुम से रिपिटेशन अलाउ कर ओके। नंबर 3 हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड with digits 0, 1, 2, 3 and 4 okay. So using the concept of counting principle multiplication and addition you can do this problem, or you can do also the element test exercise book and first exercise and second exercise some problem. In next class we do some other problems. Thank you.